Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Bhumika and today I'm gonna share three most important cardio exercises with you, which is actually मेरा जो है favorite, मेरे personal favorite जो exercise है वो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ. So इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखिएगा और हाँ वीडियो के end में मैंने आपके साथ share किया है pro tip wherein आपको जान सकते हैं आप कि क्या डाइट आपको लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए जो भी होता है वो सब आप उसमें देख सकते हैं. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. जो इसके बाद में वीडियो लेके आने वाली हूँ वो वीडियो है फॉर ग्लूट्स एंड इन ऑर्डर टू गेट नो आई नेवर एवर शेयर दिस थिंग. मैं पतला होने के लिए कोई वीडियो नहीं लाती हूँ, मैं लाती हूँ वीडियो फॉर जस्ट टू गेट फिट. सो अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो यू कैन बी फिट. सो डू नॉट वरी एंड ऑलवेज रिमेंबर ये वीडियो की एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करते हैं तो इट्स इज गोना बी पेनफुल फॉर 3 days. लेकिन 3 days के बाद आपको स्किप नहीं करना है. कंटिन्यू फॉलोइंग दिस एक्सरसाइज रूटीन. ऑलमोस्ट लाइक स्टार्ट कीजिए. 3 days के बाद अगर आप रुक गए तो आप रुक जाओगे, उसके बाद कोई फायदा नहीं है वो 3 days करने का भी. लेकिन उस 3 days के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं फॉर 7 days तो आपको वो यूज हो जाएगा. बॉडी आपको फील करोगे वो स्ट्रेच, वो पेन और लाइक वो जब वो स्ट्रेच फील करोगे तो आपको लगेगा कि यस यू आर वर्किंग ऑन समथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright guys, so I hope you all are ready to start with our first exercise. So our first exercise is squat and feet together. Let's begin. Now we will move forward to our another exercise, which is squat and knees to chest. Now it's time to relax your body and in the meantime keep breathing. Alright, now we will move forward to our next exercise, which is jump squat. Alright guys, now we are gonna move forward to another exercise, squat and balance. So here you need to focus on your body and balance. Alright, now we are gonna relax for a while. After relaxing our body, we are going to repeat this set of exercises again. So let's begin with jump squat. Now we are gonna do squat and feet together. Let's move forward with squat and knees to chest. And now, last not the least, with squat and balance.
I hope you guys enjoy this video and these exercises, and I really wish you a very best. So yes, as I promised, I come up with a solution for you, like what you should eat and what you shouldn't. So उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो खाना है वो खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन खाने से पहले और हमेशा खाने के बाद जब भी आप जो पानी पीते हो, लाइक पूरे दिन में आप जब भी पानी पीते हो, स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर। ठंडा पानी तो बिल्कुल बंद ही कर दो, जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर। और कोई भी मील ले रहे हो तो उसको गर्म करके ही खाओ। अगर आप कोई भी मील गर्म करके खाते हो तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, आपको इतना डाइजेशन में इश्यूज नहीं आते। वाटर को आप खाने से पहले पीजिए, 1 आवर पहले आप वार्म वाटर लीजिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और या फिर हाफ एन आवर पहले आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, एंड देन यू कैन गो अहेड विथ योर मील आफ्टर दैट ऑल्सो। जब भी आप खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हो या फिर जस्ट आफ्टर बाद, नहीं पीना चाहिए पानी। खाना खाते ही आपको पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप पीते हैं तो भी आई रिकमेंड यू टू ड्रिंक वार्म वाटर। उसके बाद आप जो खाना चाहते हैं खाइए ना, किसने मना किया है? जो मन है वो खाइए बिंदास, लेकिन बॉडी को वर्क करते रहिए साथ साथ। बॉडी पे वर्क करना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज माई प्रोटेस्ट फॉर you, and I hope you guys like this video. So do not forget to subscribe and click on the bell icon for more updated and related videos. Thanks for watching.